Okay, so Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. I hope you all are well. There isn't much to enjoy. लेकिन फिर भी thank you. काफी सारे सवाल थे, लगता है सर से बहुत दोस्ती हो गई है क्या? There are so many questions. Okay, that's very good. If you were interacting with him, okay, that's good. ठीक पढ़ाया? Were you satisfied with the teaching? Yes, ma'am. Okay, that's good. Okay, that's very good. That's very good. मतलब उनको हम मुस्तकिल हायर कर लें अपने पास. Will he be a good addition to the? कर लें. ठीक है बेटा. बिल्कुल. सलमान कहता है मुश्किल सवाल है. अच्छा, anyway बेटा, अब आपके पास काफी वैरायटी हो जाएगी लोगों की. Let's quickly start with and finish off with this very important topic, and that is the internal layer. थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, इसलिए I thought कि internal layer में खुद करवाऊंगी और आपकी रिवीजन क्लास okay. That's really heartening कि आपको कि बाकी टीचिंग इतनी पसंद है. अच्छा, कुछ करते हैं इस बारे में भी कुछ करते हैं. ठीक है, we'll do something about this. अच्छा, तो हम जल्दी से one more. Okay. अच्छा, वो इतना अच्छा पढ़ाती है कि you want to be taught by her. That's very good. That's very good. अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा. वो बहुत अच्छा पढ़ाती है. That's very good. That's very very good. Okay. चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है. चलें फिर. अच्छा, that's very good. मैं ये सारे कमेंट्स जरूर बताऊंगी, उनको भी बताऊंगी और मैडम गुलफ्रीन को भी बताऊंगी. चलें, that's very good. करते हैं बेटा, इसका भी कुछ करते हैं. अब शुरू करें. So we were doing the internal layer, और internal layer में मैंने आपको कहा था कि one more question. जी बेटे. Sure. Thank you my dear. Thank you मेरा बेटा. सरार जी, thank you. So I told you there was a bony labyrinth. ये सारा ये black part जो है, this carved in space in which this membranous labyrinth is lying. और bony labyrinth में आपको बताया था कि this was the vestibule, semicircular canals. This is the cochlea. ये सब bony part है. ठीक है? Okay. Now, inside the bony labyrinth, inside the vestibule, let's talk about the vestibule. Inside the vestibule, you have two sacs. This is the saccule and this is the utricle. So utricle and saccule are two sacs that are lying in this bony vestibule. Okay? This is the vestibule. इसके अलावा, this vestibule also has this oval window. ये इसको fenestra vestibuli भी कहते हैं. ठीक है? Fenestra is the opening. Fenestra vestibuli is also, this is present in the lateral wall of the vestibule, and this in life is closed by the base या foot plate of the stapes. Stapes आपको पता है ossicle head of the middle ear cavity.
this ossicle is closed in life by this stapes, base या foot plate of stapes is lying over here, and hence it closes the this opening, the oval window. ठीक है, अब ये vestibule को देख लीजिए. I'm talking about bony vestibule. Posteriorly, it is continuous with the semicircular canal. So ये semicircular canals open into the posterior aspect of the vestibule, and anteriorly ये vestibule है ना बेटा, anterior to the vestibule this is the bony cochlea, 2.5 turns of cochlea, ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे. Besides that, ये जो vestibule है, this communicates with the posterior cranial fossa. अब running through this bony part, I hope you appreciate one. Remember one thing, कि ये सारा structure जिस bone में पड़ा हुआ है ना, that is the petrous part of the temporal bone. Sorry, I'll go back. ये हमने शुरू में, बहुत शुरू में, ये देखिए, this is the petrous part of the temporal bone. ये जो internal layer है, this is lying in the petrous part of the temporal bone. ये चीज आप याद रख लीजिए. So हम vestibule की बात कर रहे थे. So there's a linear, आप उसको canal कह लें या tunnel कह लें, in this bone, petrous part of temporal bone. This is called a vestibular aqueduct. This linear canal or tunnel, which is lying in the petrous part of the temporal bone, is called vestibular aqueduct. This aqueduct communicates with the bony vestibule. Lying in this aqueduct is this duct, endolymphatic duct. This is lying in the vestibular aqueduct. Abhi aqueduct jo hai, this opens into the petrous part of the temporal bone over here, close to the internal acoustic meatus. आपने एक्सटर्नल एक्यूस्टिक की एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटिस पढ़ा था. बिल्कुल, अगर एक्सटर्नल है तो फिर इंटरनल भी होगा, और इंटरनल आपको भी दिखा देते हैं. और ये जो एक्विडक्ट है, दिस ट्रांसमिट्स द एंडोलिम्फेटिक डक्ट प्लस सम ब्लड वेसल्स. ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? Okay, fine. Now let's come to the bony semicircular canals. We're still talking about the bony labyrinth. There are 3 semicircular canals. तो जब इसकी development हमने की थी, मैंने आपको बताया था. There are 3 semicircular canals set at right angles to each other. So they occupy 3 planes in space. This is the anterior semicircular canal. This is the posterior semicircular canal, and this is the lateral semicircular canal. Now, they make 2/3 of the circle. Complete circle nahi hai, 2/3 of circle. And at both ends, they communicate with the vestibule. Okay. They open both the ends of every semicircular canal opens into the vestibule. So that way there should be 6 openings. लेकिन ऐसा नहीं है, there are only 5 openings. और उसकी वजह ये है कि 2 semicircular canals, anterior and posterior, ये दोनों, इनकी एक limb common है. 1 limb each from these 2 semicircular canals, they join together and form 1 canal. A common limb बन जाती है because the 2 limbs fuse with each other. ठीक है? So as a result, there will be 5 openings. There are 5 openings. ये बात क्लियर हुई है बेटा? Are you with me? Somebody? समझ आ गई है? Okay, ठीक है. Thank you ताइबा. दोबारा बता दो. ठीक है.
जी एम्ब्रियोलॉजी वाली बात है, बिल्कुल सही है। दैट मीन्स आपने एम्ब्रियोलॉजी का लेक्चर भी सुना था और आपको समझ भी आई थी। थैंक यू वेरी मच माय डियर इसरा, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। देख बेटा, these are the semicircular canals. They make 2/3 of a circle. Okay, and at both the ends, every canal enters into the vestibule. So that way होना तो ये चाहिए था कि since both the ends of the semicircular canals are entering into the vestibule, तो फिर 6 openings होनी चाहिए. But you only have 5 openings. The reason being, one limb each from anterior and posterior semicircular canals, they fuse with each other and enter the vestibule through a common limb. So अब दो limbs fuse कर गई, एक limb बन गई, common limb बन गई, and that common limb opens into the vestibule. As a result, 5 openings होती है. Okay, and अब ये भी देख लीजिए कि at one end, every semicircular canal terminates in a dilatation. So before entering the vestibule, it is dilated. ये dilated part जो है ये ampulla है. So this is the bony ampulla. You have 3 bony ampullae. उसका मतलब ये है कि वो जो दो limbs fuse की, अच्छा ये भी देख लो कि at one end it is dilated to form the ampulla and then it enters into the vestibule, लेकिन at the other end there is no dilatation. ठीक है, अब ये भी देख लो बेटा, ये मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी में बताया था लास्ट वीक कि the two limbs that are fusing are the ones that do not have ampullae. So जो non-ampullary limbs हैं anterior और posterior semicircular canal के, वो fuse की थी. सब all 3 semicircular canals have ampulla. Okay, और inside this semicircular canal you have semicircular ducts. अभी उसको भी कर लेते हैं. अच्छा जी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं. एनी क्वेश्चन? एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास है, और सॉरी, और वो ये है कि दिस नाउ वी स्टार्टिंग द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, इसलिए मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूं आपको. दिस इज द बोनी लैबिरिंथ. ठीक है, द बोन. दिस इज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, a series of sacs and ducts. So इसको membranous labyrinth कहते हैं. Between this bony and membranous labyrinth, this space is occupied by perilymph. Inside the membranous labyrinth, here, you have another kind of fluid which is called endolymph. Endolymph की वही composition है जो intracellular fluid की होती है. पेरीलिम्फ की वही कॉम्पोजिशन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की होती है. ठीक है जी. अच्छा, नाउ इनसाइड द जिस तरह हमने बोनी वेस्टिब्यूल किया था, सॉरी, हमने बोनी सेमीसर्कुलर कैनाल्स किए थे, बोनी कॉक्लिया किया था, and I told you every structure that we studied, the bony part, has a membranous duct inside. So this cochlear labyrinth has cochlear duct, membranous duct. अब आ गई vestibular labyrinth. उसमें you have 2 sacs, a saccule and a utricle, plus तीसरी चीज you have semicircular canals. So जो membranous labyrinth is slightly different in the way कॉक्लिया भी वही है, कॉक्लियर डक्ट आ गई, सेमीसर्कुलर कैनाल्स भी वही हैं, सेमीसर्कुलर डक्ट्स आ गई. थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है. जो वेस्टिब्यूल था उसके अंदर यू हैव 2 sacs, a saccule and a utricle.
एक ड्राइंग आपको दिखानी है, ये देख लें। ये बाहर बोनी लैब्रिन्थ है, अंदर उसके अंदर पड़ी हुई है मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। ये वेस्टिब्यूल था सारा, ठीक है। इस वेस्टिब्यूल में देखिए ये कॉक्लिया है, ये यूट्रिकल है, ये तो खैर ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हमने किया था, आपको बताया था कि दिस वाज द cochlear duct. Cochlear duct was present inside the bony cochlea. At one end, the cochlear duct was attached to the bony cochlea, wall of the bony cochlea, by the thickening of periosteum. This thickening of periosteum is called spiral ligament. ठीक है, बाकी के जो एक एंड पे तो ये हो गया, अब बाकी का जो है इतना बड़ा बोनी कॉक्लिया है, इतनी सी कॉक्लियर डक्ट है. So the other end of the cochlear duct is anchored to the opposite wall of the bony cochlea. एक वॉल के साथ स्पाइरल लिगामेंट लगा हुआ है, ऑपोजिट वॉल के साथ दिस कॉक्लियर डक्ट इज anchored कह लें या attached कह लें by this structure which is called the modulus. ठीक है, so the modulus attached is simply attached to the other end of the bony cochlea. So काम ये है कि spiral ligament है, this simply anchors the cochlear duct inside the bony cochlea. अब all this area is contains perileum. ठीक है, सराउंडिंग ये सारा एरिया, डक्ट के अंदर तो इंडोलिम्फ है ना बेटा, सराउंडिंग इस सारे एरिया में पेरिलिम्फ है. यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉक्लियर डक्ट है, ये सारी. At one end over here it is attached to the bony cochlea by this thickening of periosteum called spiral ligament, और उसके opposite wall is attached to this modulus. आपको बताया था modulus is like a screw, जिसके ऊपर वो होते हैं प्रोजेक्शंस, सब स्पाइरल प्रोजेक्शंस ही बनी हुई होती है, हाथ लगाओ तो छुपती है. मैंने उस तरह आपको ड्राइंग दिखाई थी, वो जो स्पाइरल प्रोजेक्शन थी उसका मैंने आपको नाम बताया था ऑसियस स्पाइरल लैमिना. ये आपकी किताब में से मैंने ये ड्राइंग ली है, the low one, this one. ठीक है, so that is why I'm repeating the osseous spiral lamina with you. Semicircular ducts की बात कर लेते हैं. अभी तक are you with me? Are you with me? Thank you, my dear. Thank you, all of you. God bless you. मेरे से इतने सवाल क्यों नहीं पूछते? वो सर से तो 22 सवाल पूछे, मेरे से 5 पूछते. That's very naughty of you. उसका मतलब कोई बात सुनता ही नहीं हो आप. Spiral ligament repeat कर दें, ठीक है. I thank you very much, Asham. God bless you, my dear. I really, truly appreciate. इसलिए बेटा सारी उम्र पढ़ाने के बाद मुझे ये तो पता है ना कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं. Okay, let's go back to the spiral ligament. Somebody wanted to find out more about the spiral. वही उतना ही काफी है spiral ligament.
जितना आपकी किताबें, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, एवरी वर्ड इज टेकन फ्रॉम योर बुक. हाँ ये जरूर है कुछ कैप्शन से लिया है, कुछ इसमें से लिया है, लेकिन एवरी सिंगल वर्ड फ्रॉम योर बुक, नो नॉट अ वर्ड आउटसाइड किए है, इसलिए परेशान ना होना. स्पाइरल लिगामेंट की बात कर रहे थे. दिस cochlear duct is lying inside the bony cochlea. ठीक है, bony cochlea अभी आपको दिखाया 2.5 tons opposite. This cochlear duct is attached to this bony cochlea at one end. एक एंड पे ये cochlear duct इस bony cochlea की wall के साथ अटैच्ड है. This attachment is through simply thickening. इस जगह पे जो पेरियोस्टम है वो थिकन हो जाती है और थिकन होकर ये लिगामेंट बनाती है जिसको स्पाइरल लिगामेंट कहते हैं. ओके, ऑपोजिट वॉल, ये वॉल स्पाइरल लिगामेंट बन गई. अब ऑपोजिट वॉल के साथ ये जो बाकी डक्ट की ये वाला एंड है, that is anchored to the opposite wall through this modulus. ठीक है, पहले ये आपको पता है मेसेनकाइम थी और मेसेनकाइम इंटरमेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से मोडियोलस बन गया था. हमने लास्ट टाइम मोडियोलस किया था. अब उसकी वजह से because of this attachment, this entire cochlear duct gets divided into two parts. एक हिस्सा उसमें तो cochlear duct आ गए, जो बाकी की खाली स्पेस रह गई थी अराउंड द cochlear duct, अब जो खाली स्पेस रह गई थी वो दो में डिवाइड हो गई क्योंकि यहाँ पे इसके साथ दूसरी वॉल ऑफ द डक्ट के साथ आके मोड्यूलस अटैच हो गया. सो ये जो स्पेस खाली रह गई थी above the cochlear duct you have scala vestibuli, below the cochlear duct you have scala tympani. ठीक है, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी और आपको ये भी बताया था कि between cochlear duct and scala vestibuli you have the vestibular membrane, and between the cochlear duct and scala tympani you have basilar membrane. Okay, चलो, आई होप कि अब समझ आ गई होगी, नहीं तो फिर एंड पे दोबारा कर लेंगे. अभी मुझे आगे चलिए सेमी सर्कुलर डक्ट्स की बात कर लेते हैं. ये सेमी सर्कुलर डक्ट्स है, ये सेमी सर्कुलर डक्ट्स. ठीक है, अभी हमने बात की थी ओपन इनटू द यूट्रिकल. अब ये बात याद है, उस वक्त तो हमने वेस्टिब्यूल की बात की थी. वेस्टिब्यूल में दो स्ट्रक्चर्स हैं. ये बेटा two structures in the vestibule. This is the saccule, this is the utricle, and the semicircular ducts open into the utricle. बोनी कॉक्लिया में वेस्टिब्यूल में खुला था, वेस्टिब्यूल के अंदर पड़ा हुआ है saccule and utricle. अच्छा जी, अब वही वाली बात कि instead of 6 limbs opening into the vestibule you have 5 openings, because ये देख लीजिए these 2 limbs are fused and open by a common opening into the vestibule. Utricle, sorry, ये utricle है. Vestibule bony था. When it comes to membranous तो ये utricle है. अब inside this entire structure you have inside this entire structure you have endolymph. Okay. When the head rotates, the perilymph moves. The endolymph moves. Inside this is endolymph. So when the head rotates, the endolymph moves. Up lying in the walls of the utricle, saccule, and the ampulla of the semicircular canals, the dilated part. ये मैं sites पे repeat कर रही हूँ. Lying in the walls of the saccule, the utricle, and the ampullae
of the semicircular canals are specialized kind of cells. ठीक है, इनको hair cells कहते हैं. ये basically sensory neurons होते हैं. They go and relay इनकी जो nerve fibers connecting them मैं अभी करवा देती हूँ वो nerve की go and relay in the vestibular ganglion which is lying at the ingerial acoustic meatus. मैं अभी इसकी तफसील करवाती हूँ आपको. Okay. One by one, utricle and saccule. Quick look at them. The two, utricle and saccule, ये दोनों, they are connected to each other by utricle saccular duct. ठीक है. उसके अलावा आपको ये भी पता था कि the saccule is connected to the cochlea, duct of cochlea, by this small connection. The saccule is connected to the cochlear duct by this small connection, which is called ductus reunions. So utricle and saccule are connected to each other by utricular saccular duct, ये वाली, and the saccule is connected to the cochlear duct by the ductus reunions. और आपको मैंने अभी बताया था कि utricle, saccule, semicircular canals, all of these contain specialized kind of cells जिनको maculae कहते हैं. Now, the thing to remember is कि ये जो utricle है ना, इसमें जो macula है, they are present in the floor of the utricle. So they are parallel to the base of the skull. जबकि saccule में जो macula है ना, ये इसकी medial wall में पड़े हुए हैं, so they are vertically oriented. और ये अब देख लीजिए, ये maculae हैं. Their maculae, ये specialized sensory cells, they receive innervation from the vestibular division of vestibulocochlear nerve. ठीक है, ये fibers जो हैं that connect this peripheral fibers and that connect these maculae to the ganglion, vestibular ganglion. और फिर इस vestibular ganglion के जो central cells हैं, अब vestibular ganglion में neurons भरे हुए हैं बेटा, bipolar neurons होते हैं. ठीक है, इसका जो peripheral process है, that is attached to the maculae in the saccule, utricle, semicircular canals की ampulla में. In neurons lying in the vestibular ganglion, इनके जो central processes हैं, they make up the vestibular nerve. ये बात clear हुई है? सर मैं क्लास ले रही हूँ, अभी आपको कॉल बैक करती हूँ. सर मैं क्लास ले रही हूँ, अभी आपको कॉल बैक करती हूँ. ओके, आगे चलते हैं. ये देख लीजिए, ये ड्राइंग में ढूंढ रही थी. ये बाहर बोनी कॉक्लिया है, अंदर मेम्ब्रेनस है. तो दिस इज द वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल के अंदर यू हैव यूट्रिकल, you have the saccule. The utricle and saccule are connected by utricular saccular duct. जबकि the saccule is connected to the cochlear duct by this small duct which is called ductus reunions. Please also note that the semicircular canals open into the utricle. ठीक है? एंडोलिम्फेटिक डक्ट की बात कर लेते हैं बेटा. दिस डक्ट हमने अभी बात की थी. सो दिस डक्ट
endolymphatic duct is formed either uh, by two small ducts that arise from the saccule and utricle. One duct each coming out of the saccule and utricle joined together to form endolymphatic duct. Endolymphatic duct terminates as the endolymphatic sac. ठीक है, आपकी किताब में जो दिया हुआ है वो ये है कि ये जो the endolymphatic duct arises from ये जो ductus religionis है यहाँ से. But whatever the case may be, this is the endolymphatic duct. Mostly books so इस Y-shaped connection को कहती हैं, but it doesn't really matter. Okay? अच्छा. The important thing is कि ये जो endolymphatic duct है, this runs through the vestibular duct, ends in the endolymphatic sac. ये जो endolymphatic sac है, it is lying deep to the dura mater, posterior cranial fossa का dura mater. That dura that is covering the petrous part of the temporal bone. Remember, ये सारा structure जो है, this is lying in the petrous part of the temporal bone. So the dura that covers the petrous part of the temporal bone, उसमें close to the internal acoustic meatus, opening of the internal acoustic meatus के करीब, deep to the dura, you have the endolymphatic sac. ये sac क्यों बनाया था? Sorry, I'm so sorry. Excess of endolymph is stored in this sac. Blood vessels form excess of endolymph that is stored in the sac. Then, जब recirculation होती है, when this endolymph is absorbed, here this excess is released into the utricle saccule ducts, etc. Is this thing clear? I guess so. जी ये मैं दिखाना चाह रही थी आपको. Fine, thank you, my dear. Thank you. ये मैं आपको वो जो screw था वो दिखाना चाह रही थी. This is the modulus. Thank you, thank you, thank you all of you. This is the modulus. ठीक है? A bony structure made up of spongy bone. और ये उसके गिर्द, ये जो आपको इस कील के गिर्द ये जो नजर आ रहा है, projection सी going round and round. This projection is the osseous spiral lamina in reality. Real modulus में भी बिल्कुल ऐसी projection नजर आती है, which is called the osseous spiral lamina. और ये जो cochlear duct की opposite end थी, इस तरफ एक end पे spiral ligament लगा हुआ है और इसको अपनी तरफ खींच के यहाँ पे ले गया. अब ये जो दूसरा end है, इसको ये osseous spiral lamina से attached है. ओके, अब ये cochlear duct जो है, please note it is a closed tube at इस end पे the cochlear duct is closed. However, ये जो basal turn है, इस basal turn पे it is attached to the saccule via ductus reunions. When you take a section, the cochlear duct is triangular. ऐसे देख लीजिए. Okay? अच्छा जी. अब ये देखिए. So the duct is between the spiral ligament and the modulus का osseous spiral lamina. As a result, this duct divides the entire bony cochlear duct into two channels, scala vestibuli, scala tympani. अगर इसको आप longitudinal उसमें देख लें बेटा,
ये तो कट सेक्शन है ना, आप लॉन्गिट्यूडनल उस पे देखिए, ये कॉक्लियर डक्ट है, ये अटैच्ड है स्पाइरल लिगामेंट के साथ। एज अ रिजल्ट ये सारा बोनी कॉक्लिया जो है दिस गेट्स डिवाइडेड, ये ऑसी स्पाइरल लैमिना है ऑफ द मोरियोलिस। सो अब यहाँ पे पार्टीशन हो गई, इस पार्टीशन की वजह से ये सारा बोनी कॉक्लिया दो डक्ट्स में इज डिवाइडेड इनटू टू। अब ये सारा जो पार्ट है दिस इज outside the cochlear duct, so it is filled with perilymph, because outside the cochlear duct you have perilymph, inside the cochlear duct you have endolymph. ठीक है, sorry, so this is the scala vestibuli, this is the scala tympani. अब आप ये देख लीजिए, ये फुटप्लेट ऑफ स्पेस स्टेपीज है, दिस क्लोजेस द ओवल विंडो, उसको ओवल विंडो को फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई भी कहते हैं, बिकॉज दैट क्लोज द ओवल विंडो इज, या फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई इज एन ओपनिंग इन द स्केला वेस्टिबुलाई। इसका लोअर एंड जो है, ये देखो बेटा, लोअर एंड तो ओपन है ना, इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। सो यहां से शुरू करें, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज पे जाएं, इट गोज लाइक दिस, गोज अप scala vestibuli at the peak, at the top over here, then it comes down again. ये जो top है, this top is called helicotrema. Then from the top it goes into the opposite canal, which is the scala tympani. So अब ये जो sound produce हो रहा है base of stapes की वजह से, इसकी vibrations they go up the scala vestibuli, fluid को move करती हैं, fluid यहाँ पे endolymph है, sorry ये perilymph से filled है, endolymph duct के अंदर है, this is filled with perilymph, so it moves the perilymph, these sound vibrations are transmitted via the helicotrema back to the scala tympani. Scala tympani is closed by this structure, which is secondary tympanic membrane. आगे चलते हैं. This is an enlarged view. ठीक है, ये diagram आपकी किताब से लिया, it's a beautiful diagram. This is more descriptive, easy to understand. Okay, अब आपको मैंने बताया था कि apex of the cochlea cochlear duct जो है वहां पे the scala vestibuli becomes continuous at the apex with scala tympani. ये जो apex जहाँ पे जो दोनों ducts continuous हैं, इस apex को helicotrema कहते हैं. So sound waves are transmitted via the foot plate of stapes to the oval window, या fenestra vestibuli कहते हैं oval window. These are transmitted up the scala vestibuli, which is filled with perilymph, goes to the apex of the membranous cochlea. At the apex, you have this, the fluid goes down. So the scala tympani, the area at the apex where the scala vestibuli becomes continuous with the scala tympani, the area, this is called helicotrema. So as the fluid goes down the scala tympani, अब आगे the opening of scala tympani is it is closed by the secondary tympanic membrane. ठीक है? Yes, it's a connection between the two. Yes, you're very right. उसवा बिल्कुल सही
बिल्कुल सही समझ में आया है। अब मैं ये डायग्राम समझाती हूँ। ये डायग्राम आपकी किताब में है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, tympanic membrane, sound waves, sternal auditory meatus, move the tympanic membrane. Tympanic membrane पे attached है handle of malleus. Handle of malleus से head of malleus, it is attached, head of malleus is attached to head of incus, long process of incus which is attached to stapes. Stapes का ये base है या foot plate है which closes this fenestra vestibuli या oval window. अब ये sounds via this oval window they pass into the scala vestibuli. इसमें perilymph है. So ये lymph, perilymph से ये starts to move. It goes up over here. यहाँ पे apex पे पहुंच के, this is the helicotrema where the scala vestibuli becomes continuous with the scala tympani, and now the sound waves are coming back. They come back over here to this opening, which is round window kele ya fenestra cochleae kele. This is closed by secondary tympanic membrane. यहाँ पे आके ये जो साउंड वेव्स जो थी, जो यहाँ से शुरू हुई थी, इस एंड से ओवल विंडो से शुरू हुई थी, राउंड विंडो पे आके, सिंस दिस इज क्लोज्ड, तो फिर ये डैम्पन डाउन कर जाती है. ये मिड एयर कैविटी है, इसकी एयर में ये वेव्स जो हैं ये डिसिपेट कर जाती है. ठीक है, ये पाथवे समझ में आ गया? बिकॉज दिस पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका सारा ऑडिटरी वो है. गुड, आई एम ग्लैड कि आपकी समझ में आ गया है. ओके, नाउ लेट मी गो अ लिटिल फर्दर. अच्छा जी, कॉक्लियर डक्ट की बात कर लेते हैं हम, उसी पे ही आ जाएं वापस. ये कॉक्लियर डक्ट है, ठीक है. आपको मैंने बताया था कि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्केला वेस्टिबुलाई बाय दिस वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन. अब ये रूफ बना रहा है कॉक्लियर डक्ट की, और फ्लोर बना रहा है बेसिलर मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द कॉक्लियर डक्ट फ्रॉम द स्केला tympani. ठीक है. Resting on the basilar membrane, you have the organ of Corti. Organ of Corti क्या है? ये cells are, these are cells resting on the basilar membrane. दो किस्म के cells होते हैं. एक supporting cells होते हैं that you see in green, and then you have these orange cells which are hair cells. You have two sets of cells. You have inner hair cells, you have outer hair cells. अब inner हो या outer हो, all these cells are embedded, the tops of the cells are embedded in this structure which is called tectorial membrane or membrana tectoria. ठीक है. So the hair cells, inner and outer hair cells plus membrana tectoria, together they are called organ of Corti. ये organ of Corti. That means hair cells, inner hair cells, outer hair cells, plus tectorial membrane. Together they are called organ of Corti. ठीक है. अब होता ये है कि because of the pressure of sound waves आई, sound waves ने move किया perilymph in the scala vestibuli. When the perilymph moves, ये बेटा फिक्स्ड है. Duct, cochlear duct fixed है. So when this moves, when perilymph moves, it distorts the walls of the cochlear duct. उन walls को टेढ़ा मेढ़ा कर देती है. जब ये walls टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो ये जो hair cells हैं, basically these hair cells are receptors. Neurons हैं, receptor neurons. ठीक है. So because of distortion of the wall,
स्पेशली दिस वॉल बेसिलर मेम्ब्रेन, जब ये डिस्टॉर्ट होती है, ये सेल्स ऊपर नीचे होते हैं, तो दे डिस्टर्ब द hair cells plus the pictorial membrane. So organ of Corti को वो डिस्टॉर्ट करते हैं, मूव करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. बिफोर आई गो एनी फर्दर, बाकी जो है वो उसमें नर्व में आपको बताती हूँ. लेट्स डू दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं उस वक्त से कहे जा रही हूँ, इंटरनल अक्यूस्टिक मीएटस. बेटा ये है इंटरनल अक्यूस्टिक मीएटस. ये नीचे जुगुलर फॉर्मन है, ये हाइपोग्लॉसल कैनाल है, ये पीट्रस टेम्पोरल बोन है सारी. All this is petrous temporal bone. Lying in this petrous temporal bone, this is the opening of the internal auditory meatus. Basically, this is a canal, इस तरह, laterally running canal, about 1 centimeter long. इस तरह का. Okay. At this end, at the lateral end, this canal is closed by a bony plate. So ये जो canal है, यहाँ तो open है, internal auditory canal या internal acoustic meatus. ठीक है. Open at the, अब ये end इसका medial end होगा because ये midline है. Open at the medial end, 1 centimeter long. इस end पे, lateral end पे, it is closed by a bony plate. इस bony plate में perforations हैं, और उन perforations में से क्या क्या है? You have a perforation for facial nerve plus its companion the nervous intermediates. अभी करती हैं. So the facial nerve, and then you have 3 compartments for the vestibulocochlear nerve. Below the facial nerve is the cochlear area जहाँ से cochlear nerve गुजरती है, and this entire is the vestibular area जहाँ से vestibular nerve की fibers गुजरती है. ओके. प्लस इस सारे बोनी जो है सेप्टम या बोनी प्लेट जो है, इसमें से ब्लड वेसल, लैब्रिन्थाइन ब्लड वेसल्स भी गुजरती हैं. सो यू हैव द पैसेज ऑफ द 7th cranial nerve entering the internal acoustic meatus. You have the 8th cranial nerve, the 2 divisions, vestibular nerve, cochlear nerve, plus you have blood vessels going into the internal acoustic meatus. Clear है? Clear है? Good girl. Thank you. आगे चलते हैं. Good. That's very good. It's heartening. It's really heartening. अच्छा, आगे चलते हैं. Facial nerve करते हैं. Facial nerve कौन सी? Which part? The part inside the skull. आप उसको इंट्राऑसियस कह लो या उसको आप इंट्राक्रेनियल कह लो, क्योंकि क्रेनियल कैविटी के अंदर है. सो इंट्राक्रेनियल. मैं इंट्रासेरिब्रल पार्ट नहीं कर रही, ठीक है. मैं ब्रेन के अंदर जो इसका पार्ट है मैं वो नहीं कर रही. आई एम ओनली डूइंग दैट पार्ट विच इज इनसाइड द क्रेनियल कैविटी. ये सो इंट्राऑसियस कह लो या इंट्राक्रेनियल, दोनों एक ही चीज है. ठीक है जी. अच्छा, इससे पहले let me give you a quick recap of the middle ear cavity. आपको middle ear cavity की पता है. Boundaries: you have a roof, tegmentum tympani, you have a floor, you have an anterior wall, carotid wall जिसको कहते हैं, you have a posterior wall जिसमें mastoid wall है, जिसमें ये mastoid antrum है, और ये जो आपको नजर आ रही है ये medial wall है, and the lateral wall has been removed. That is why you see a medial wall. You see the roof, anterior wall, floor and posterior wall. ठीक है. अब ये देख लीजिए, ये जो facial nerve है ना, it emerges at the junction of the pons with the medulla. So pontomedullary junction पे से ये emerge करती है. It arises by 2 routes, a motor route and a sensory route. Motor route is for the supply of muscles of facial expression, और जो sensory route है
बेटा उसको इंटरमीडिएट नर्व कहते हैं, ये छोटी सी साथ पड़ी हुई है, या नर्वस इंटरमीडिएट कहते हैं. दिस इज द सेंसरी रूट. इट इज फॉर carries taste fibers and parasympathetic fibers. ओके. और फिर अब आपको पहले भी बताया था, इट एंटर्स द स्कल. यहाँ ये सारा स्ट्रक्चर इज लाइंग ओवर हियर. सो दिस फेशियल नर्व leaves the brain between the emerges from the surface of the brain between the pons and the medulla. Junction of the pons with the medulla, pontomedullary junction, it emerges and enters this internal acoustic meatus along with the 8th cranial nerve. यहाँ से enter की, runs through the internal acoustic meatus, जो canal था 1 centimeter long. ठीक है. अब ये टेम्पोरल बोन में आपको पता है पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में सब पड़ा हुआ है. नाउ व्हेन इट रीचेस दिस promontory, यहां पे पहुंच के ये जो फेशियल नर्व है, दिस बेंड्स बैक पोस्टीरियरली. व्हेन इट बेंड्स पोस्टीरियरली, अब ये जो बेंड जो प्रोड्यूस हुआ है, दिस बेंड इज कॉल्ड, इस बेंड पे एक डायलेटेशन बन जाती है, जिसको जेनिकुलेट गैंग्लियन कहते हैं. ये प्योरली सेंसरी गैंग्लियन है. ओके. आफ्टर इट बेंड्स ओवर हियर, देन इट बेंड्स posteriorly and runs along the medial wall. When it reaches the posterior wall, ये देख लीजिए ये फेशियल नर्व है. When it reaches the posterior wall, it bends down a second bend, runs outside the posterior wall. ठीक है. ये सारी facial nerve is running outside the midlar cavity. Midlar cavity को ये enter नहीं कर रही है. ओके. बाहर से ही सब कुछ है. And then आपको पता है it bends down and then leaves the skull through the stylomastoid foramen. मैं इसको एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ. बच्चे, facial nerve arises at the pontomedullary junction of the brainstem. ठीक है. Enters the skull via internal auditory meatus, ये opening में से, runs through the internal auditory canal. When it reaches the medial wall of the middle cavity, it bends backwards, running on the medial wall of the middle cavity. That is why it produces this prominence for the facial nerve. ठीक है. Where it bends posteriorly on the medial wall of the middle cavity, that bend is called geniculate ganglion, because वहाँ पे उस bend पे the nerve dilates to form the geniculate ganglion, which is a sensory ganglion. When this nerve running on the medial wall, when it reaches the posterior wall, it bends downwards. Okay. It bends downwards and leaves the skull through the stylomastoid foramen. ये देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा दूं. ये मोटर रूट है, ये सेंसरी रूट है. ठीक है. When this nerve reaches the medial wall of the middle cavity, it dilates to form the geniculate ganglion, which is a sensory ganglion. Then this nerve turns posteriorly. इस bend पे, where the nerve touches the medial wall of the middle cavity and turns posteriorly, इस bend पे geniculate ganglion. Geno is a bend, so इस bend पे geniculate ganglion produce होता है. Then this nerve runs along the wall of the middle cavity
When it reaches the posterior wall, it bends down again, a second bend, and leads to the stylomastoid foramen. ये देखो एक बड़ा क्यूट सा मुझे मिला, ये इसने दिखाया हुआ है अपनी तरफ से internal acoustic meter. Now this is the facial nerve. When it reaches the wall of the middle ear cavity over here, ठीक है, it bends backwards posteriorly. At this bend, ये dilatation बन गई geniculate ganglion. It then goes as far as the posterior wall तक पहुंच के it bends down again, leads through the stylomastoid foramen. अब इसकी intracranial part में it gives off three. Actually तो बोल देती है, बहरहाल आपकी किताब में 3 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने चौथी को मेंशन नहीं किया. It gives off nerve to the stapedius. It also gives off this nerve called a tympani, and then it gives off this sensory nerve, which arises from geniculate ganglion. ये the greatopetrosal nerve of tear secretion, the रोने धोने वाली nerve. ठीक है? So these are the, ये tympanic plexus है, which is lying on over here, medial wall of the, ये promontory जो बनी थी उसके ऊपर. This tympanic plexus, इसमें भी contribution होती है facial nerve की. Glossopharyngeal nerve आती है उसमें, इसमें facial भी आती है. Okay? Yes. Any questions? समझ आ गया? चलो. Okay, fine. Good, good. Last nerve, vestibular cochlear. मैं ये कर चुकी हूँ आपके साथ, सिर्फ एक रिकार्ड दे रही हूँ. You have receptors in the ampullae, you have receptors in the utricle, in the saccule. ठीक है? जो utricle और saccular में receptors हैं, they are concerned with static balance. जो semicircular canal के ampullae में जो receptors हैं, they are concerned with kinetic balance. Okay? अब ये जो receptors हैं ना, अच्छा, अब ये आपको बताया था vestibular ganglion है. इस vestibular ganglion में neurons पड़े हुए हैं. These neurons are bipolar cells. They have a peripheral process, they have a central process. The peripheral process of the bipolar cells in the vestibular ganglion, they go as far as the maculae that are lying in the ampulla, that are lying in the semicircular canal, lying in the utricle and saccule. Okay? So the peripheral process go up to the maculae, relay in the neurons, and the central process then arise from these neurons, and they make up the vestibular root of your vestibular nerve, which is a branch of one of the two branches of vestibular cochlear nerve. ठीक है? अभी जो फिर vestibular nerve होगी, this will go to the vestibular nuclei lying over here in the middle line, namely the pons. So अब ये nerve opposite direction में चल रही है. It is going towards the brain. Cochlear आपको बताया था, अभी बताया है. ठीक है? Hair cells of the cochlea, organ of Corti, उनको जाके relay करती है peripheral process now of cochlear ganglion. ठीक है? ये जो okay, I think my time is finished. I'll take a class on Friday. मैं ये भी करवा दूंगी, and whatever जो कुछ मैंने पढ़ाया उसमें से whatever you want. So for the time being, it's Khuda Hafiz.